अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अच्छा ठीक। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बाद में आ गया, क्योंकि स्टूडेंट और एक क्लास में है। हाँ 4:28 हुए हैं, 4:30 पे स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, ओके सर। सर प्लीज स्टार्ट। Okay, friends, good afternoon to you all. As promised, I am giving you certain questions and you will be required to answer them. So I am sharing with you some question list which I have prepared. Okay, question one is under straight line method, depreciation is सर, calculated on. हेलो सर, प्लीज हाँ शेयर योर पीपीटी। हाँ जी. प्लीज शेयर योर पीपीटी। Okay, I'm not sharing a PPT. So can you see the Excel? यस सर, यस सर। Okay. Okay. Question number one is payroll is since I have completed payroll, so I will be asking you questions from payroll only. Under straight line method, depreciation is calculated on A, original cost, B, scrap value, C, WDV or return on value, D, none of the mentioned options. You have four options: option A, option B, option C, and option D. You have to choose the right one. Under straight line method, original cost depreciation is calculated on option A is original cost, option B is scrap value, option C is WDV or return on value, option D is none of the mentioned options. The answer is option A. A is the correct answer. Okay. Second question for you. Payroll is based on the dash. Payroll is based on options are four: the payroll card, time card, employee ID, and card statement. You have four options which are as under payroll card, time card, employee ID, and card statement. Okay, I can see. Okay, Tejaswini, Little Paul, and Fahim. Mark your answer. Payroll card, time card, employee ID, or card statement. I'm preparing you for the exams and I have asked the question number two. Payroll is based on the payroll card, time card, employee ID, and card statement. I'm seeing your answers.
Tejaswini, Litton Paul, Fahim, Aarti, Siddharth, Pragya, VHS. Let me see the answers which you can give. Not an answer. Okay. Payroll is prepared based on the option B is the that is given in the book, that is time card. Option B is the right answer. Okay. Employees' earnings generally include, okay, employees' earning generally include basic salary, second is allowances, third is incentives, and fourth is gratuity. You have to pick the odd one out. The question hereby is not correct. The employees earning generally not include, not इसमें लगाना भूल गए हैं. Not include basic salary, allowances, incentives, and gratuity. Let me see the right answer. Okay, are you not responding? Respond, no? Sir, you're not getting the answers, sir. Sanjay? You're getting the messages late, sir. मेरे को आपकी बात समझ नहीं आ रही है ठीक से. आप दोबारा बोलिए. You're getting the messages late, sir. We have replied. Getting the messages in glare form. Okay. What to do? Is everybody getting the messages in glare form? Sir, I'm telling you, you're getting the messages late, sir. Late. They're getting delivered late. Acha, okay. You are writing the answer, but that is delivered rate. Yes, sir. Okay. So let me see how I can make it fast. 3 incentives. No, little Paul, the class didn't happen yesterday. So I am supposed to take the class on Tuesday, Thursday, and Saturday. Well, Saturday will be difficult for the institute. So I am requesting the institute that my classes will be 1.5 hours each. Okay. Let me see. Employees earning generally not include basic salary, allowances, incentives, and gratuity. Answer is it possible for you to say the answer? What is the right answer? Is it incentives, sir? No. The employees earning generally not include gratuity because the gratuity is, and that is written in the book, gratuity is payable to the employee after he leaves, or that is on superannuation. So most of the time when the employee leaves the organization, gratuity is payable. So the right answer is gratuity. Okay. Fourth question is, employees' deductions are recovered from the employee salary and deductions are remitted to the respective statutory authorities as per the existing law. In certain cases, there would be a matching contribution paid by the employer. Employees deduct or withholdings does not include. First is social security deductions. Second is employment or professional tax to be paid by the employee. Third is employees' earnings for the period. Fourth is income tax to be paid by the employee. You have 4 choices.
Pick the right one. 3, sir. Employees' earnings for the period. Okay. You are saying C. Securities. Anybody for ABC, ABCD? Anybody else? Sorry, sir. A. Okay. POD रह गए हैं फिर. POD भी आंसर कर दो. The employee's deductions are recovered from the employee's salary and the deductions are remitted to the respective statutory authorities as per the existing law. In certain cases, there would be a matching contribution paid by the employer. Employees' deductions, withholding. Employees के deductions में और withholding में does not include. Social Security A है, right? A है इसका wrong answer. Okay, professional tax में प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवर करता है. एम्प्लॉइज अर्निंग फॉर द पीरियड, ये भी एम्प्लॉय से रिकवर करके जमा करा देता है. बट टैक्स एम्प्लॉयर जमा कराता है, तो उसकी डिडक्शंस में उसकी कहीं पर भी ये नहीं आता. तो आंसर इज फोर्थ. दिस अलाउंस, द फिफ्थ क्वेश्चन इज, this allowance is given by the employer to the employee to compensate the rise in prices. Options 4 हैं CCA, DA, conveyance allowance and HRA. You have 4 options. The allowance is given by the employer to the employee to compensate the rise in prices. Dearness allowance, sir. DNS allowance. First क्या है CCA? CCA क्या होता है? CCA is city compensatory allowance, sir. Okay. The right answer is DA or CCA? DA, sir. DA is for rise of prices. Right of price. Absolutely right. The fifth answer is जो DA होता है, that is DNS allowance. Sixth question for you. Based on the employee compensation records and the time card information, the payroll for the month is prepared by calculating the employee's earnings, which include following items are not included. First is basic, second is allowances, third is incentives, and fourth is leave encashment. बताइए 4 ऑप्शन कौन सा सही है? Yes. Following item is not included in the payroll of the month. Say something.
Is it 4, sir? Leave encashment. Right. It is 4. The fourth is leave encashment. Okay. Okay. The seventh question is, once the salaries are released to the employees, the payroll team would prepare the individual pay slips. Pay slips are generally issued to dash employees. आपके options हैं total employees, second option है contract employees, third option है salaried employees, fourth option है salaried and contract employees. Generally, pay slip is issued to the dash employee. Salaried employee, sir. Anybody else? That is the right answer. Eighth question है, when the payroll process is outsourced to a third party profession, it is known as outsourced pay system. It is dash system. Cost effective, cost efficient, costly, costly and cost friendly. पेरोल को जब आउटसोर्स करेंगे तो आप ये वाला सिस्टम पाते हैं. इसमें जो है बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर. इफ यू हैव द बुक you can find the answer. क्या बोल रहे हो? If you have the book in front of you. No, sir. Okay. I am going to show you. Sir, cost effective. Okay, एक मिनट रुकिए. It is cost effective and provides sir. operational level results. It is cost effective. तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. Cost efficient, cost effective, costly, costly and cost friendly. The right answer is. Right answer क्या है इसका? Cost efficient. Cost effective. अभी तो बताया था ये ना cost effective. बुक में लिखा हुआ है जो आपका आंसर होगा वही बुक में लिखा होगा. You may find that cost effective and cost efficient meaning the same, but what is written in the book, you must remember that. बुक में अगर cost effective लिखा है तो if you write the cost efficient to be right answer, it will be treated as wrong. Cost effective है तो cost effective ही आएगा. Understood? Okay. ऐसे ही आपको चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो सही मिल जाएगा. Payroll records does not include the advice communication received from HR department about the additions or deletions in the payroll. Payroll register, either hard copy or soft copy.
PF returns and PF challans, and fourth is leave encashment. दिखाओ मैं कहाँ मैंने कहा है? इसमें लिखा हुआ है payroll records includes the advice communication, payroll register, PF return, PF challans, insurance payment receipts, tax remittance challans, ASA challans, other related vouchers. अभी आप ये सब रिमेंबर करके अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. Does not include the following. इसमें कौन सी चीज नहीं लिखी है? इसमें बुक में जो आपको ये मिलेगा. Leave encashment. If you have the book in front of you, it will be good. You can read the book and try to answer it. Sir, leave encashment is the answer. हाँ जी Leave encashment. जी बिल्कुल ठीक है. इसमें लिखा हुआ है कि आप लीव एनकैशमेंट का वो करते हैं. लीव एनकैशमेंट इज द राइट आंसर. ओके. इंटरनल कंट्रोल फॉर द पेरोल प्रोसीजर्स आर. फर्स्ट लिखते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव एंड डिडक्टिव, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिडक्टिव कंट्रोल. The controls can be either preventive or deductive. क्या है इसका आंसर? B, sir. B. Okay. All the recoveries and withholding such as PF deduction, ESA deduction, tax deduction should be remitted to the respective statutory authorities within the due date. Income tax TDS shall be deposited by 15th, 21st, 7th or 10th. 7th, sir. Yes, this is the right answer. Dash refers to the days for which the earnings are deducted for unauthorized absence of work, shortage of leave available to the credit of employee. Dash refers to जब employees is Loss of shortage pay. of sorry, Sir, loss employee of pay. is short of leaves, then he is going to recover, or that is he's going to pay from his salary for the unauthorized absence of work is called as dash. Loss of pay, holiday wages, overtime wages, gross wages. Loss of pay, sir. Yeah. Gratuity is an ex gratia payment made to an employee for serving the employer for a longer period of time. Normally, gratuity shall be paid to an employee who has served a minimum period of dash years under an employer. 7 years, 5 years, 3 years, or 8 years. 5 years. Right answer. Also termed as dash would be provided to the employee by his employer at the pay period every month, disclosing his earnings and deductions. First statement, second आपको रिटर्नशिप फीस मिलती है,
थर्ड मंथली पे आउट मिलता है, फोर्थ इज पे स्टेटमेंट। Pay statement. Is the right answer. Salary and wages is in dash and it is debited to the, आपके पास चार ऑप्शन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हैं आपके पास ऑप्शन 1 के जो फिल द ब्लैंक्स है, और डेबिट टू में ओवरहेड, पीएनएल एंड ओवरहेड। Indirect expenses and overheads. हाँ, Indirect expenses and overheads. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड Overheads, last fourth one. ओवरहेड। ओके, Indirect expense and P&L account, sir. हाँ, थर्ड ऑप्शन। This allowance is given by the employer to the employee to compensate high cost of living in a society. ये लगता है आया हुआ क्वेश्चन। CCA, sir. Okay, compensate the high rising prices, high cost of living, society। CCA, sir. CC क्या होता है? City compensatory allowance. हाँ हाँ। Bonus is referred to as ex gratia payment made voluntary without any obligation. इंडिया में बोनस गवर्न होता है by the payment of bonus act. Which year it was passed? Options है 1971, 1965, third option is 1981, or fourth option is 1985. — 1965, sir. Payment of Bonus Act 1965. 65 is the right answer. Under this method, payment consists of two portions, one based on regular time basis and the other is linked to cost of living and merit awards. Flat rate system, variable pay system, high wage system, and graduated time rate. बुक देखिए, So variable pay system. variable pay system और graduated time rate. Graduated time rate, sir. Payment consists of two portions, one based on regular time basis and others related to cost of living. Graduated time rate. अब last question है, royalties and patent fees paid for using technology is an example of the following: indirect expenses, direct expenses, overhead, or abnormal expenses. Direct expenses, sir. Direct expenses. Return. Anybody else? It's there in the book, sir. Direct expenses. Yeah, there's a book, but I
I'm questioning others to answer this. Direct expenses is the right answer. So you have answered it all correct. And let us move to the other part of the book, that is store accounting. So we have not touched the store accounting. Or have we covered the store accounting? Say, No, sir. No, sir. okay. So store accounting or inventory accounting, that is the accounting for जो spares होते हैं, which is used in factory. And let me give you an example of what does a factory does. Okay. So आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो वो इस तरीके से काम करेगी. Okay. I am giving an example that is clear to you, that I am showing you the PowerPoint. PowerPoint is visible. PowerPoint Yes, visible sir. है आपको? Yes. Yes, sir. Okay. So the factory, जैसे मैं हीरो होंडा फैक्ट्री में I was employed for 3 years of my initial starting of my career. So Hero Honda में the factory was at a location which was Gurgaon, which was 30 miles away from my residence. Hero Honda had a centralized inventory system. Centralized और decentralized क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ अभी. Centralized उनके यहाँ पर सिस्टम था, जैसे हीरो होंडा की फैक्ट्री में जब आप जाते हो तो आपको जाते ही मिलता है एक शॉप जो कि कहलाता है पेंट शॉप. पेंट शॉप उनके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है. ओके. और उसके बाद आता है वेल्डिंग शॉप. जो भी प्रोडक्ट है पहले आता है वेल्डिंग शॉप में, फिर आता है पेंट शॉप में, फिर उसके बाद पेंट के बाद वो जाता है असेंबली बिल्ड. इसमें ऑल फैक्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि असेंबल होते हैं, दैट इज असेंबल्ड इन असेंबली शॉप. फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट
असेंबली के बाद आता है इंजन शॉप है। ओके, इसके बाद आता है फाइनल आउटपुट बनता है और आउटपुट शॉप, इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो आउटपुट बन के आ जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हीरो होंडा की, उसके बाद बाइक बन जाती है, रेडी होके हमारे सामने आती है। ओके, आउटपुट के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है एक्साइज बिल्ड। एक्साइज में वो प्रोडक्ट को रेडी करके रखते हैं कि दैट द प्रोडक्ट इज रेडी, और उसके बाद उसके ऊपर एक्साइज लगती है और यहाँ से प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं। तो वेल्डिंग शॉप से पेंट शॉप पे, पेंट शॉप से असेंबली शॉप पे, असेंबली शॉप से इंजन शॉप पे, इंजन शॉप से आउटपुट शॉप पे, और आउटपुट से एक्साइज बेल्ट में चला जाता है और उसके बाद उसके ड्यूटी या स्ट्रक्चर उसके चेंज हो जाता है। तो ऐसे होता है हीरो होंडा फैक्ट्री में जो मोटरसाइकिल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो ऐसे होती है। और उसके सेंटर में है, सेंटर में है स्टोर। क्या करेगा? अगर अगर वेल्डिंग शॉप को मटेरियल चाहिए होता है तो वो मटेरियल को दे देगा। उसको कोई मटेरियल चाहिए, यहाँ से उसको मटेरियल देता है। अगर पेंट शॉप को कोई मटेरियल चाहिए तो यहाँ से मटेरियल देगा। अगर असेंबली को कोई मटेरियल चाहिए तो वो यहाँ से मटेरियल देता है। अगर इंजन शॉप को कोई मटेरियल चाहिए तो यहाँ से इंजन शॉप को भी मटेरियल देता है। और आउटपुट शॉप को कोई मटेरियल चाहिए, यहाँ से मटेरियल देता है, बट एक्साइज को नहीं देता है क्योंकि द प्रोडक्ट इज ओवरऑल रेडी। सो दैट इज द वे ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है। दिस इज नोन एज सेंट्रलाइज स्टोर। जो स्टोर है बड़ा है और सेंट्रलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस का क्या होगा? डिसेंट्रलाइज। तो ईच शॉप विल हैव देयर ओन स्टोर। वेल्डिंग शॉप का अलग स्टोर होगा, पेंट शॉप का अलग स्टोर, असेंबली बेल्ट का अलग स्टोर, इंजन शॉप का अलग स्टोर, आउटपुट में उसका अलग स्टोर होगा। तो ऐसे करके 6-7 मिनी स्टोर्स वो बना लेंगे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि सबको मैनेज करना विल बी ए डिफिकल्ट टास्क। और कुछ मटेरियल सभी के पास कॉमन होते हैं, सभी के पास सब कॉमन होगा। जैसे पेंट शॉप, पेंटिंग मटेरियल वेल्डिंग के पास भी होता है, पेंटिंग के पास भी होता है और असेंबली के पास भी होता है। तो जो मटेरियल कॉमन है उसका कंट्रोल मिसिंग होगा, क्योंकि अगर स्टोर डिसेंट्रलाइज हो गए तो कंट्रोल मिसिंग होगा। ठीक है? तो द बेस्ट पार्ट इज द कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज इफ इट इज सेंट्रलाइज, लेकिन स्टोर्स इफ डिसेंट्रलाइज द कंट्रोल मे बी लॉस्ट। ओके, ये है। आपको समझ में आ गया सब? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं
इसकी बुक की ओर। Store accounting or inventory accounting, a word is used interchangeably. Introduction to store accounting. Stores and materials are used interchangeably. However, both the terms differ. A store has a wider meaning than materials. Well, this book is not updated, so book will be updated to you. The word store is not being used. उसके लिए यूज करते हैं इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री है उसका मीनिंग ज्यादा है। स्टोर इज अ प्लेस इन विच द मटेरियल्स आर स्टोर्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर केप्ट इन द स्टोर्स। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, tools, equipment, repair and maintenance of parts, factory supplies, components, fixtures, jigs, etc. Jigs क्या होती हैं? Jigs are the dies. किसी भी चीज को बनाने के लिए जब आप डाई को यूज करते हैं, that is called as jig. Sometimes it includes finished good and semi-finished goods with the scope of this term, thus kept in stores are called those items, those are called stores. तो आपके जो भी आप आइटम बोलेंगे वो स्टोर्स का पार्ट हो जाएंगे। ओके, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, repair and maintenance of parts, factory supplies and goods, etc. Inventories are goods that are meant for eventual conversion into cash in the normal course of business. Inventories क्या होती है? तीन होती है inventories. Finished good held for sale in the ordinary course of business, semi-finished in the process of production for such sale, and stores consumable and packaging items in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. तो आपके पास स्टोर तीन टाइप्स का होगा। रॉ मटेरियल फर्स्ट टाइप, सेमी फिनिश गुड सेकेंड टाइप, थर्ड इज फिनिश गुड। ओके, चलिए। Receipt of stores. All material received should be examined, counted, measured, or weighted as the case may be when delivery is taken, and there should be taken in charge by a responsible officer who should see that the quantities are correct. Agar suppose 500 quantity is to be delivered, तो स्टोर मैनेजर ये देखेगा कि वो 500 ही है। ओके, स्टोर्स मटेरियल क्वालिटी चेक करता है उनकी, और वो ठीक होंगी तो एक्सेप्ट करता है, अगर उसमें से कुछ रिजेक्शन होगा तो वो रिजेक्ट भी करेगा। देयर क्वालिटी गुड एंड दे आर अकॉर्डिंग टू द approved specification where prescribed, and issued a certificate to that effect. The officer receiving the store should also be required to give a certificate that he has actually received the material and recorded them in the appropriate stock register. Okay, issue of stores. When materials are issued from stock for the departmental use, स्टोर्स में से इशू कैसे करेंगे? जब डिपार्टमेंटल स्टोर को मटेरियल देगा, या मैन्युफैक्चर के लिए मटेरियल देता है, या सेल के लिए, अगर आप सपोज सेल करते हैं स्टोर के अंदर की, तो दैट इज रिकॉर्डेड एज सेल। ओके, जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग स्पेयर पार्ट्स, दैट इज अलाउड। फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग स्टोर्स, that is allowed. So for example, you are doing the sales from the stores. The officer in charge of the stores could see that indent in the prescribed form has been made by a duly authorized officer, examine it carefully with reference to the orders or instruction for the issue of stores, and order the issue of stores. तो ऑफिसर जो है वो स्टोर के अंदर ये देखेगा कि इंडेंट जो आया है दैट इज करेक्ट,
that is proper, that is all signed, and accordingly he will issue the material. Okay. 3 types of store transaction are as recorded below. Okay. Receipts by purchase from supplier, जो आपको माल मिलता है वो सप्लायर से मिलता है. बाय डाइवर्जन फ्रॉम अदर स्टोर्स, अगर स्टोर के पास कुछ भी डाइवर्ट करते हैं, जैसे पेंट शॉप में 50 डब्बे मंगाए थे, बट उन्होंने रिक्वायरमेंट रेज करी थी कि हम 5 डब्बे अपने पास स्पेयर मंगवा रहे हैं. 50 डब्बे में से 5 डब्बे स्टोर को वापस कर दी. तो पेंट शॉप ने 5 boxes of paint they have refused or they have given to the store for upkeep by diversion from other stores or by devolution from the works. So there are 3 kinds of receipt that is explained. Okay. Issues are by issue of material of works, first thing, by issue of material to contractors, consumers, works, sale, etc., and by diversion to other stores. So 3 are the material issue or receipt, and 3 are the issues of material. Okay, we understood 3 receipts and 3 issues. The substance form which the product is made is termed as material. It may be a raw or manufactured state. Raw material are goods that are yet to be introduced into the production process. Raw material कौन से होंगे जो production process में introduce करेंगे. It forms the integral part of finished product. Materials are used for manufacturing goods. In most cases, material is an important constituent of total cost. Hence, material cost is the main component of the cost of production. Materials may be direct or indirect. Direct material is what you see in the product, and what you don't see is the indirect material. Okay, ये costing में बहुत ही important है. What is direct material? क्योंकि direct material की cost prime cost बनती है और indirect material की cost overhead बनती है. Okay. Any questions here? Any questions? No, sir. Okay, what is called as direct material? Direct material means cost of raw material used or consumed in the production. It is not necessary that all material purchased in a particular period is used in production. So it is not necessary that whatever you brought in, whatever that you purchase is all consumed in. So here the consumed material is consumed, rest material is kept in the store. Okay. Indirect material is that material which cannot be easily identified and dated with a particular product, job, or process. Okay. Classification and codification. The storekeeper keeps the material in the store. The duties of storekeeper includes accepting, identifying, classifying, and placing the material. Okay. जो बहुत जरूरी काम है वो मटेरियल को चेक करना है. Checking of material. He should verify the material received with the consignment note, inspection report, and materials received report. क्योंकि स्टोर कीपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि मटेरियल जो भी रिसीव करेगा वो ठीक क्वांटिटी का होना चाहिए, ठीक क्वांटिटी का और ठीक क्वालिटी का. ओके. अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब लोग स्टोर ऑफिसर को पकड़ते हैं.
Therefore, he should send the copy of material receipt report received by him after due verification to the accounts department for payment. उसी के बेसिस पे अकाउंट्स में कॉपी जाती है स्टोर रिसीव रिपोर्ट, और उसी के बेसिस पे बिल को प्रोसेस करते हैं अकाउंट्स वाले, उसी के बेसिस पे बिल को रिजेक्ट भी करते हैं अकाउंट्स के। स्टॉक लेवल्स, अब बात करते हैं स्टॉक लेवल्स की। टू अवॉइड ओवर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स, द मैनेजमेंट डिसाइड्स the maximum quantity of material to be kept in the store. Okay, मैं आपसे पूछता हूं, अगर सपोज आप घर की अंदर अपने घर में हैं एंड यू हैव टू ऑर्डर पिज्जा आप ऑर्डर करते हैं, तो आप कितना पिज्जा ठीक समझते हैं ऑर्डरिंग करने के लिए? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द number of members who will be eating the pizza. आपके घर में 5 बंदे हैं, that you will require 1 or 2 pizzas. You will not need more than 2 pizzas. अगर आप सपोज 5 पिज्जा ऑर्डर करते हो और घर में मेंबर हैं खाने के लिए 2, तो योर 3 pizzas will be kept in your fridge, जो कि अगले दिन काम आते हैं। अगले दिन सपोज आप पिज्जा नहीं खाते हो, that will go to the dustbin. तो आपके 3 पिज्जास डस्टबिन में चले गए because you have not eaten them. तो मैक्सिमम लेवल क्या है और मिनिमम लेवल क्या है? मिनिमम लेवल होता है जो आप मिनिमम स्टॉक अपने पास रखते हैं। जैसे आपके घर में दालें हैं, आपके घर में चावल है, आपके घर में आटा है, ये सब आप 2 किलो 1 किलो ही रखते हैं, नॉट 50 किलो, नॉट 60 किलो, बट डिपेंडिंग अपॉन दी ऑडियंस। अगर सपोज आप हॉल में शादी करना चाहते हैं, तो यू विल कीप द क्वांटिटी फॉर 50 किलो 60 किलो, लेकिन आप घर की रख रहे हैं तो 1 किलो या 2 किलो में आप संतुष्ट हो जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द यूज of whatever stock you are keeping. Okay, the maximum stock level is the largest quantity of a certain material which should be kept in the store at any point of time. Maximum क्या होता है? That is maximum. आप स्कूटर में पेट्रोल भरवाते हैं, तो स्कूटर का जब पेट्रोल टैंक फुल हो जाता है, आप उसके बियॉन्ड नहीं भरते हैं, क्योंकि store tank is full. Okay, maximum stock is computed as follows. Maximum stock is equal to reorder level plus reorder quantity minus bracket में minimum consumption into minimum reorder period. Reorder period क्या होता है? जो आप अगला पेट्रोल पंप या अगला दुकानदार उसका कब आएगा और उसके लिए आपको कितना रीऑर्डर पीरियड चाहिए। जैसे कि मैं कोई ऑर्डर करता हूँ सामान को, जो कि सामान दूसरी स्टेट से आता है, तो मेरे को दुकानदार बोलता है कि उसको 3 दिन लगेंगे उसको ऑर्डर करने में, उसके बाद उसको ऑर्डर रिसीव करने में। तो आई शुड हैव द स्टॉक ऑफ मिनिमम 3 days, बिकॉज द ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन what I give to my broker, and he says that he will take 3 days minimum to deliver the material. Okay. Maximum stock क्या होगा? That is EOQ or economic order quantity plus minimum stock. EOQ क्या होता है? ये हम देखेंगे. That is calculated by the formula. Minimum stock क्या होता है? Minimum stock level is the lowest quantity balance of material which must be kept at all times so that the assembly line may not be stopped on account of non-availability of material.
मिनिमम लेवल वो है अगर ये वाला स्टॉक भी खत्म हो गया तो हमारी आइडल हो जाएगी टीम, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल इज 3 days। जैसे मैंने बोला था कि मेरे को 3 दिन ऑर्डर करने में लगते हैं, तो जैसे ही मैं 3 दिन के पास पहुंचूंगा, मिनिमम 3 days का स्टॉक है, मेरे पास रीऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाएगा कि आई शुड रीऑर्डर दी क्वांटिटी। It may be stopped on account of non-availability of material. It is decided by taking into account the following. Minimum stock is computed as follows. Minimum stock level is equal to reorder level minus normal consumption into average reorder period. Reorder level क्या होता है? It is that part of, it is a point at which if the material in store has reached the order of further supply of material must be placed. Reorder level वो होगा कि जब मेरा स्टॉक वहां तक पहुंच जाए तो मेरे को रीऑर्डर करने का ट्रिगर मेरे को मिल जाएगा. The point is fixed between the maximum level and minimum level. This point is automatically indicates the process of placing a fresh order. स्कूटर में एक रिजर्व होता है पॉइंट. जैसे ही स्कूटर में रिजर्व लगता है, दैट इज अ इंडिकेशन कि आप फटाफट पेट्रोल पंप पे जाइए और उसके बाद फटाफट पेट्रोल भराइए, क्योंकि रिजर्व में 1 लीटर पेट्रोल होता है और 1 लीटर पेट्रोल में आपको पता लगेगा नहीं कब खत्म हो गया. तो राइट इंडिकेशन इज स्कूटर में जैसे ही आप रिजर्व लगाते हैं, दैट इज अ इंडिकेशन for you to go to the petrol pump for filling up the petrol. Okay. 5:26 हो गए हैं. क्वेश्चन है किसी का? Any questions? सर बात ये है, ये अभी जो पढ़ रहा हूँ, जो हम लोग थियरी पढ़ रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स भी आएगा ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आने का उम्मीद है ना एग्जाम में. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. थियरी आते हैं नहीं, मेरा जो डाउट है नहीं, अभी जो सिर्फ पढ़ रहा हूँ theory. सिर्फ ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं सिर्फ यही नहीं, अभी आप क्वेश्चन कराएंगे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा एंड यू विल रिक्वायर टू फिल इन द आंसर्स. हाँ हाँ हाँ. मतलब क्वेश्चन पेपर विल बी मिक्सचर ऑफ थियरी एज वेल एज द प्रॉब्लम्स, दोनों ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा. आप उसके इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, तो चलिए, ओके, बाय. थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय. Sir, can I get the PDF, sir? Hello.